हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हम लोग ग्रेविटेशन का करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड माय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। राइट, क्लियर ना? चलो डिस्कस करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहले हम डिस्कस करेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। होता है एक ऐसा सैटेलाइट, देखो जियो का मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे। होता है एक ऐसा सैटेलाइट जो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में 24 आवर्स में एक बार चक्कर मारता है ना। कहाँ से किधर, वेस्ट टू ईस्ट। बोलता है इफ अ सैटेलाइट revolves from west to east in a circular orbit in 24 hours, then it is said to be called geostationary satellite. राइट, क्लियर ना? अब इस सैटेलाइट का जो प्लेन होता है वो मेरा अर्थ के प्लेन का को प्लानर होता है। आई मीन टू से कि द ऑर्बिट of the satellite is concentric and coplanar with the earth. Right, clear? अब यहाँ पे बात आ रहा है क्वेश्चन का, व्हाई इट इज अ स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हो गया? द रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड जो बोलो ऑफ द सैटेलाइट with respect to Earth is 0. Due to this, it seems to be stationary to an observer on the surface of the earth. Clear है? It is also said to be called synchronous satellite. होता है, it is also said to be called synchronous NOUS synchronous satellite. Why it is said to be called synchronous satellite? होता because its angular speed is same as that of the earth. वेरी क्लियर स्टूडेंट? तो यही मेरा एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक है ना, मेरा मेन पॉइंट है कि इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट in a circular orbit in 24 hours, then it is said to be called geostationary satellite. The orbit of the satellite is concentric and coplanar with Earth. I mean to say with the orbit of the Earth. The relative velocity or speed of the satellite with respect to the Earth is 0. Due to this, it seems to be stationary to an observer on the surface of the Earth. It is also said to be called the synchronous satellite because the angular speed of the satellite is same as the angular speed of the Earth. Very clear? चलिए अब हम बात करेंगे कि इस
सैटेलाइट का हाइट क्या रहता है? What should be the height of the geostationary satellite? Right, clear? So height of the geostationary satellite. Right, student? तो बोलता है we know that the expression of the height of the satellite is given as, that is by t square r square g pi 4 pi square whole raised to the power 1/3 minus half. ऐसा था एक्सप्रेशन. राइट, क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे जो t है, t is my 24 hours, that is my 24 into 60 60 into 60, right, clear? 24 hours one day, that is 24 into 60 to 60. तो आई थिंक इसको पूरा कैलकुलेट करो 24 आवर्स में, इसको सेकंड में लाइन तो 846 आई थिंक 864 होता है 86400 सेकंड होता है. Now radius of the earth is my 6400 किलोमीटर. तो इसको मीटर में लाइए, दैट इज माई 6.4 इंटू 10 का पावर आई थिंक 6 मीटर होगा. ऐसे ही होता है. राइट, क्लियर? Yes. And that is value of g is my 9.8 meter per second square. And तो अब यहाँ से जो हाइट निकालेंगे तो लगभग आता है 35,930 लगभग मेरा किलोमीटर या मीटर, आई थिंक किलोमीटर होता है. राइट, क्लियर ना? द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज 39,000, दैट इज रफली इक्वल टू माई 36,000 किलोमीटर. राइट स्टूडेंट, क्लियर है ना? तो चलो हम इससे हमको ये याद रखना है कि लगभग कितना हाइट पर आता है. आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द सैटेलाइट टू बी जियोस्टेशनरी. क्या कंडीशन है? तो कंडीशन फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कंडीशन फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. Condition for geostationary satellite. Right, clear na? Condition for geostationary satellite. पहला कंडीशन है कि जो सैटेलाइट मेरा जो रिवॉल्व कर रहा है वो द सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बात होना चाहिए. दूसरा है कि इट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट which is concentric and coplanar, with the equatorial plane of the earth. तीसरा है it takes
24 hours to complete one revolution. Right? And its height is about 35,930 kilometers from the surface of the earth. ये बात हुआ। एंड फिर the relative velocity or speed must be zero with respect to the earth. राइट स्टूडेंट, ठीक है यहाँ तक। तो ये कंडीशन है कोई भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी होने के लिए। द सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट विच इज कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लानर with the equatorial plane of the earth. It takes 24 hours to complete one revolution. Its height is about 35,930 kilometers from the surface of the earth, and the relative velocity or speed must be zero with respect to the earth. Clear ना? अब हम बात करेंगे कि हम इस सैटेलाइट को हम ग्लोबली कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझना पड़ता है, लिखना नहीं है, हमें फिगर से समझ जाइए कि ऐसा है। मान लो कुछ इस तरह से समझेंगे कि that is called my global utilization of this global utilization of the geostationary satellite ग्लोबल यूटिलाइजेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। कुछ ऐसा समझिए, मान लीजिए ऐसा मेरा एक ऑर्बिट है, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं कि ये मेरा अर्थ है, ऐसा हमने अर्थ बना लिया, ये अर्थ है, ऐसा अर्थ है। राइट, क्लियर। यहाँ पे हम एक सैटेलाइट को सेटअप कर दिए, ठीक है। एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक सैटेलाइट मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे। ये सैटेलाइट S1, ये मेरा S2 और ये मेरा S3 है। 3 सैटेलाइट है। राइट, क्लियर। अब ये सैटेलाइट से ये सैटेलाइट का कुछ ऐसे है, इस सैटेलाइट का इस सैटेलाइट से कुछ इस तरह से है, और इस सैटेलाइट का इस सैटेलाइट से कुछ इस तरह से है। राइट ना? तो आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरह से है, मेरा डायरेक्शन मेंशन है, इस तरह से डायरेक्शन मेंशन है, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ग्लोबली अगर हम क्या करेंगे, ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट को हम ऐसा फिक्सअप करते हैं, तो इसके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, ये एंगल भी मेरा 120 डिग्री का है, और ये एंगल भी मेरा 120 डिग्री का है। तो अगर मैं 3 सैटेलाइट को 120 डिग्री इंक्लाइन करके अगर हम सेटअप करेंगे, तो ना ग्लोबल मेरा इस सैटेलाइट के थ्रू, इस सेटअप के थ्रू हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। राइट ना? तो बोलता है विद द हेल्प ऑफ इधर लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 satellites, that is my S1, S2 and S3, the entire globe is communicated easily. Very clear, student? तो ये तो एक मेरा ऐसा है,
and each satellite is inclined at an angle of 120 degree. ठीक है, each pair of satellite is inclined at an angle of 120 degree. ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या मेरा यूज है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. चलिए हम बात करेंगे यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. Now come about the topic uses of geostationary satellite. Uses of geostationary satellite. वन बाई वन हम यूजेस को करेंगे. तो बोल रहा है कि इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब कि इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. ठीक है, पहला. दूसरा बोल रहा है कि we can analyze and we can analyze the upper region of the atmosphere with the help of this satellite. Alright, clear? तीसरा यूज बोल रहा है. थर्ड यूज इज the weather forecasting is done with the help of this satellite. वेदर फोरकास्टिंग में हम इसे कर सकते हैं. राइट, क्लियर? एंड फोर्थ वन इज कि इस सैटेलाइट के हेल्प से हम अर्थ का एग्जैक्ट शेप को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो वी डिटरमाइन द shape of the earth with the help of this satellite. Right, clear? And fifth one is अगर मेरे को सोलर रेडिएशन के बारे में स्टडी करना है, सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज, तो फॉर स्टार्टिंग ऐसे लिखेंगे, फॉर स्टार्टिंग solar radiation, right now, for studying solar radiation and cosmic rays, we take the help of this satellite. राइट स्टूडेंट? तो आई थिंक यही टॉपिक है आपका. ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है, पहली बात उसको हम कैसे ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्या कंडीशन है और क्या यूजेस है. आई थिंक ये सारा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा. ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वाली बात नहीं है. ठीक है, क्लियर ना? तो थैंक यू स्टूडेंट.